Hello students, welcome back. So today we are going to start another chapter 6, that is molecular basis of inheritance. In the previous chapters already we have done about the inheritance. Okay, so here we will discuss that what is new in this chapter. So here if we will discuss about the inheritance, what was the inheritance? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है. सो व्हाट इज दैट थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनहेरिटेंस. Now if you recall the Mendelian inheritance, in case of Mendelian inheritance what we did that whatever the character is transmitting from parents to the offspring, it is due to the factors. Mendels ने क्या दिया था नाम? Factor name. Okay, later on discovery happened, and during that discovery what scientists found that there is some other thing which is responsible for this inheritance. Okay, so what is that thing which is present inside it? So after the discovery in 1869, the Friedrich mission, he contributed more in this field and found that it was a nucleic acid. It was the nucleic acid which is responsible for this transfer of character from parents to the offspring, and for that he said there is a DNA, okay, which we are going to study about. In this whole chapter we will discuss or we will focus on DNA or the nucleic acid. So what he said that DNA is that acidic medium which is present inside the nucleus, okay, and he said it as a nuclein. Still he was not able to give it very clear, but he said that something is present inside the cell. For example, this is animal cell and here this nucleus is present, and he said that something is present inside this nucleus which is responsible for the inheritance of character. Okay, now before that you have studied that when this factor comes, okay, when this factor came, that after that we have studied the chromosomal theory of inheritance. Okay, why that time we said that the chromosomes are responsible because it contains genetic material. Okay, what we said, it contains genetic material which is responsible for the inheritance. So here we are talking about the same thing. Okay, we are talking about that inside the nucleus some chromosomes are present. Inside this chromosome what is there? DNA is present, and in this DNA some genes are present. Okay, so we have done this much. So now we will study that what are these types of nucleic acid, because we are saying that this nucleus contains some genetic material, और we are saying it's contain nucleic acid. यही कहा था कि यहाँ पर क्या है, कुछ nucleic acid है. So here we will study that majorly we are having two types of nucleic acid. हमारे पास कितने टाइप के nucleic acid है? Two types of nucleic acid, that is DNA and RNA. Most of the time we are studying about the DNA, which is a genetic material, but sometimes RNA is also present. Okay, in some of the viruses RNA is also a genetic material. Okay, again if you will talk about this nuclein or what it is a mixture of nucleus or cytoplasm somehow. So in case of prokaryotes what is there? It is distributed all about. ओके, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, देयर इज नो सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर देयर, सो इट इज अ स्कैटर्ड फॉर्म. Now if we talk about the eukaryotes, it depends upon different species to species, that in eukaryotes most of the time it can be present in the nucleus or the chloroplast. So these can also be the source, or these can be the site of this DNA. Okay, so majorly we will discuss about the DNA present inside the nucleus. Okay, now we said that we are having two types of nucleic acid. Okay, and this nucleic acid is responsible for the transfer of character or for the inheritance of characters. हम क्या कह रहे हैं, अब हमको पता चल गया है कि हमारे पास जो inheritance के responsible है, what it is it is nucleic acid. Okay, so on this basis we have divided it into two, that is DNA and RNA. And so what is this DNA and RNA? If you will if you know about the DNA is what? DNA is a deoxyribonucleic acid. I am writing here deoxyribonucleic acid.
Okay, and this RNA is ribonucleic acid. Okay, so what is happening here, instead of that we have removed the oxy group. Okay, now in later on we will study the structure of RNA as well as DNA. जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो what is the difference राइबोन्यूक्लिक एसिड में और डीऑक्सी में. डी मीन्स टू रिमूव समथिंग, हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, टू रिमूव समथिंग लाइक दिस वी आर टॉकिंग दैट डी मीन्स किसी चीज को अलग करना. सो व्हाट वी आर डिटैचिंग हियर, वी आर डिटैचिंग द ऑक्सी ग्रुप. ओके, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम रिमूव कर देंगे इन केस ऑफ डीएनए, और जो कि किसमें प्रेजेंट रहेगा, आरएनए में. यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली व्हेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ. Okay, for your information, what is DNA? Deoxyribonucleic acid. And what is RNA? Ribonucleic acid. Or we can say ribose nucleic acid as well. Okay. Now, as we are saying that what is nucleic acid? Now the question arises that we are saying that both are the nucleic acid. हम क्या कह रहे हैं, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं. तो क्या ये न्यूक्लिक एसिड है क्या, व्हाट इज इट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, अगर मैं बात करती हूँ about the carbohydrates or about the proteins. Proteins are what? Proteins क्या हैं? Proteins are the chain of amino acids. Okay? Proteins क्या है? Polymer and these amino acids. जब ये amino acids की chain जुड़ती है like this, what it is forming? It is forming protein. तो protein क्या हो गया? Polymer and these amino acids are the monomer. Okay? Like this, if I say about this nucleic acid, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या होंगे? न्यूक्लिक एसिड भी हम क्या कह रहे हैं, दीज आर ऑल्सो पॉलीमर. ओके, लेकिन प्रोटीन वर द पॉलीमर ऑफ व्हाट, अबाउट द एमिनो एसिड. ओके, सो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट. ओके, किसका पॉलीमर है, क्योंकि ये भी तो किसी चीज से बना होगा. सो इट मेड अप ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, व्हाट इट इज, न्यूक्लियोटाइड्स. For example, this is one of the nucleotide. It is combining with another nucleotides. Okay. So what we are saying, this nucleic acid is a chain of nucleotides. Now we will understand one by one that what is nucleotide. अब nucleotide भी क्या है, ये भी किसी चीज से बना होगा. तो then we will understand one by one that how this nucleotides forms. So here, for our understanding, it is said that what is this genetic material or what it is this inheritance which is responsible, nucleic acid, it may be DNA or it may be RNA, and this nucleic acid is made up of nucleotides. That's why we are saying these are the polynucleotides. इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है, आरएनए है, हमको क्या कहते हैं, these are the polynucleotides because it is made up of different or chain of the nucleotides. Okay. Now there is one term gene which we are going to study here, that as we have said that the genetic, the inheritance or the thing which is responsible for the inheritance, it is present where, into the DNA or the gene. So this gene is what, it is the part of the DNA. जो हम DNA पढ़ेंगे उसका क्या है, पार्ट है, and it is made up of nucleotides. Same thing we are discussing. What it is, gene, it is a part of DNA. As we have said, a cell is there, inside the cell nucleus is present, inside the nucleus chromosomes are present, and inside the chromosome DNA is present, and inside this DNA this gene is present. यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जो भी DNA present है, okay, so what it is made, this gene is formed, or we can say gene is a segment. For example, this is a DNA, this is a double helical structure DNA. इसका एक segment अगर हम लेंगे, what you will say, it is a gene. Okay, segment of DNA, it is known as gene. And if it is a gene or it is part of DNA, it means that it is also made up of the nucleotides. ये भी किससे बना होगा, nucleotides से बना होगा. So whole sum we are getting that we have to understand what this thing is. nucleotide है क्या? Okay. Now another important point about the gene, that it is the heredity unit. Okay, now we can say it is the heredity unit which is responsible for the inheritance. Okay, अब ये factors और gene both are the same thing as we have discussed earlier also. Mendels ने कौन सा term use किया, factors, to
represent the inheritance unit. And then later on after the study what came here, gene. जब किस पे स्टडी हुई, क्रोमोसोम पे स्टडी हुई. when there will be advanced discovery in the microscope, advancement हुए, तो क्या हुए, we were able to see more magnified image. Okay, so from there we concluded that this gene is responsible, or this is the unit which is responsible for the inheritance of characters from parents to their offspring. Okay, so we can say it is gene is the heredity unit and both are the same thing, right? Now as we are saying that this is the thing which is responsible for transferring the character, so what you will call it, genetic material. इसको आप क्या कहोगे, genetic material क्या है, that thing which is responsible for transferring the character, क्योंकि ये एक ऐसा material है जो क्या करेगा, genes को transfer करेगा. किसको transfer करेगा, genes को. ओके, एंड डीएनए इज दैट कैरियर. डीएनए क्या है, कैरियर है जो जीन्स को लेके जाएगा. ओके, हम कह सकते हैं डीएनए इज अ व्हीकल जिसमें जीन प्रेजेंट होता है और वो आगे की जनरेशन में कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है. ओके, सो नाउ अब जब हम कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, बिफोर दैट आई हैव रिटन वन थिंग मोर. Who proposed this term? Firstly, Johnson proposed this term firstly in 1909 that he gave the term gene instead of that factor. पहले factor बोलते थे, बाद में जॉनसन ने अपने स्टडी के बाद इसको क्या टर्म दिया, जीन. ओके, और जीन किस में रहता है, डीएनए में रहता है. ओके, डीएनए एक गाड़ी की तरह है जो एक जगह से दूसरी जगह जीन्स को लेके जाती है और उसी की वजह से क्या होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है. सो what should be the genetic material, because it is the only carrier. Okay, it is the only carrier which is taking from here to there. So what happens that how should be the genetic material, genetic material कैसा होना चाहिए, genetic material. So what should be the definition of genetic material? It is a substance. What it is? It is substance which controls the inheritance of trait from one generation to next generation. यानी कि जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है जो कंट्रोल करता है कि जो ट्रेट है उनको कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट होना है. ओके, सो वी कैन से जेनेटिक मटेरियल इज दैट सब्सटेंस विच कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस. पूरी इनहेरिटेंस को कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है इसको कंट्रोल करता है. ओके, अब अगर ये कंट्रोल करता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. Okay, if it fulfills that characteristics then only we can say it is a good genetic material. ठीक है, genetic material में ये सारे characters होने चाहिए. So what should the character? It should be able to store and express genetic information. It means that इसके पास वो ability होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, information को store कर सके. अगर information store नहीं करेगा तो inherit नहीं करेगा. ओके, सो वो सारी चीज़ें उसके पास ऐसा होना चाहिए कि स्टोरेज होना चाहिए जो कि क्या करे, इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में पहुंचाए. ओके, एंड इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, एज वी आर सेइंग डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो हाउ इट विल रेप्लिकेट. सो इन दिस वन वी विल स्टडी दैट कैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं. ठीक है, डीएनए क्या करते हैं, पहले अपनी कॉपी बनाते हैं, इट ट्रांसफर इनटू एमआरएनए, देन प्रोटीन, देन like this protein is going from one to another generation which is determining a particular trait. हर एक trait के लिए कुछ proper प्रोटीन के कोड होंगे. ओके, सो इट विल शुड बी रेप्लिकेट. इसे क्या होना चाहिए, अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो होगा जिसपे ये टेंडेंसी होगी कि इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ. ओके, द थर्ड थिंग, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस. ओके, सो व्हाट डज इट मीन, इसमें कुछ स्कोप भी होना चाहिए ताकि इस पर चेंजेस कर सकें हम. ओके, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, म्यूटेशन वॉज ए सडन इनहेरिटेबल चेंज. म्यूटेशन में क्या हो रहा था, कुछ जीन लेवल में चेंजेस हो जा रहे थे. ओके, कुछ क्रोमोसोम्स लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा था, वी आर गेटिंग रिकॉम्बिनेंट्स ऑल्सो, वी आर गेटिंग सम न्यू थिंग. ठीक है, sometimes this mutation is harmful but sometimes this mutation should be there and this mutation should be slow. okay, कुछ धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए. why this mutation is important? अभी क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन क्यों जरूरी है. इफ देयर विल बी नो म्यूटेशन व्हाट विल हैपन, अगर चेंजेस नहीं हुए जीन लेवल पे तो क्या होगा, देयर विल बी ऑल सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, सब एक जैसे इंडिविजुअल होंगे.
there will be no chances of improvement. आप improvement कहाँ पे कर सकते हो? जहाँ पर variation है. ओके, ब्रीडिंग के चांसेस या फिर इम्प्रूवमेंट के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? जहाँ पे पॉपुलेशन डाइवर्स होगी, जहाँ पे वेरिएशन होगा. सो हियर दिस म्यूटेशन इज प्रोवाइडिंग वेरिएशन. ओके, व्हाट इट इज providing? Variation. And this variation is important for what? It is important for the evolution. Okay, evolution क्या है कि as the climatic condition is changing, so the person or the species are also fitting itself according to their environment. यही तो होता है कि जो भी species है वो अपने आप को एक particular environment पे adapt करवाते हैं. If it will not adapt to that particular environment, so it will not able to survive, it will extinct. Okay, so we can say that this variation is important for the evolution, so that it can adapt very easily in the changing environment. Okay, so these are some properties which we have discussed. So from here we have concluded that this DNA is responsible for the transfer of character. And what should be the structure of DNA? ये DNA किससे बना है? It is made up of nucleotides. Okay, it is made up of nucleic acid. DNA क्या है? एक nucleic acid है और ये nucleic acid किससे बना है? Nucleotide से. Now the another thing which we will discuss here, that is nucleotides. कि nucleotides क्या होता है? So now here we will discuss about the structure of nucleotides. As we are saying that whether it is a DNA or an RNA, it is what? It is nucleic acid, and nucleic acid is the chain of nucleotides. Okay, so what is the structure of this nucleotide? हमने क्या कहा कि DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चेन एक साथ पे जुड़ती है. Okay, so here what should be the structure of nucleotide? It is made of three things. It is made up of three components. Nucleotide कितने components से बना होता है? Three components. What it is? It is sugar, or we can say ribose sugar, as well as nitrogenous base and the phosphate group. So how many things are there? Sugar, nitrogenous base and phosphate group. इन तीनों चीज को ज्वाइन करके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड. Okay, so one by one we will study about all these three components. Okay, so firstly we have started with the nitrogenous bases. So nitrogenous bases again can be of two types. Nitrogenous bases कैसे हो सकते हैं? Two types के हो सकते हैं. क्यों कह रहे हैं nitrogenous bases? क्योंकि these are the nitrogen containing compound. इनमें क्या present रहता है? Nitrogen. Okay, so on this basis we are having two types. What are they? Purine as well as pyrimidine. Clear? So purine and pyrimidine. So there is some difference between this purine as well as pyrimidine. What is the difference? That if you will see the structure or the example of purines, if you will see the examples of purine, all they are double ring. जितने भी members purine के होंगे वो कैसे होंगे? Double ring. Okay, and if you will talk about the pyrimidine, it is of only single ring. इसके example कैसे होंगे? Those are having only single ring. Okay, and if it is a double ring, and how many members they are having? 5 membered ring, and here they will be the 6 membered. Okay, and another difference is that purines are the ring which is developed in the purine, it is known as imidazole ring. जो ring purine में बनेगी उसको हम कैसे कहेंगे? Imidazole ring. Okay, and the ring which is forming in case of pyrimidine, it is of benzene ring. So these points are clear from this diagram. Okay, or this I have drawn here. Examples of purines are adenine and guanine. Okay, examples of purines are adenine and guanine. And what are the examples of pyrimidine? Thymine and cytosine. Okay, so here we are discussing about the DNA as well as RNA, because both are made up of the nucleotides. दोनों ही किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से. So now on this basis there is some difference. If we will talk about the DNA, okay, जब हम DNA की बात करेंगे, so what would be the purine? कौन कौन से purine होंगे हमारे पास? Adenine and guanine. Okay, but in case of RNA, what happens? The only change is that in case of pyrimidine,
डीएनए में तो थायमीन और साइटोसिन होंगे, लेकिन अगर आप आरएनए की बात करेंगे, थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। सो डीएनए के कौन कौन से प्यूरिन होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, pyrimidine कौन से होंगे? थायमीन एंड साइटोसिन। एंड व्हाट विल बी द प्यूरिन ऑफ आरएनए? एडेनिन, ग्वानिन, and what will be the pyrimidine? Uracil and cytosine. Okay, and later on we will study that A always pair up with the T. A किसके साथ पेयर होता है? T के साथ में। और G किसके साथ में पेयर होता है? C के साथ में। जब हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे then we will understand that how they are joining with each other. So we are having two types of nitrogenous bases, purine as well as pyrimidine. Okay. Now the another component of this nucleotide is the pentose sugar. दूसरा component हमारे पास क्या है? Pentose sugar. Now what is this pentose sugar? If you will recall the chapter of biomolecules, what we have done in biomolecules, we are having sugar, and sugar are what? These are the saccharides. Sugar क्या होती है? Saccharides. And we have done different types of sugar. For example, monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. हमने कैसे पढ़े? Monosaccharide, oligosacharide and we have said polysaccharide. Okay. If you will recall about the monosaccharide, मोनोसेक्राइड कौन से थे? जिनकी कार्बन चेन C3 से C7 तक होती है. ओके, आई एम राइटिंग हियर C3 to C7. सो वी हैव डन C3, C4, C5, C6, इस तरीके से हमने, जिसमें 3 कार्बन चेन थी, इसमें 4 कार्बन चेन थी, 5 कार्बन चेन, 6 and 7. ये किसके अंदर थे? मोनोसेक्राइड्स के अंदर. सो इन दिस वी हैव डन in another oligosaccharides we are having another between these, and in polysaccharides we are having more than it. Okay, so here if we will talk about this C3, it is triose. Okay, C4 को हमने क्या कहा था? tetrose. Okay, here pentose. So here we are talking about what type of sugar? 5 carbon chain which is having pentose sugar. ओके, हमने इसका डायग्राम पढ़ा था. कैसे रिंग थी इसकी? फ्यूरानोज रिंग. हमने 2 स्ट्रक्चर थे हमारे पास, पायरानोज रिंग एंड फ्यूरानोज रिंग. पैरानोज रिंग हम किसमें पढ़े थे? ग्लूकोज में. बट हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द राइबोज शुगर. पेंटोज शुगर के क्या एग्जांपल्स थे? पेंटोज के 2 एग्जांपल्स थे. व्हाट वर दे? राइबोज एंड देन डीऑक्सीराइबोज. ओके, सो वी कैन से दैट पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट कंटेन्स 5 carbon chain. Okay, now if you will talk about this pentose sugar again can be of 2 types. What are they? Ribose sugar and deoxyribose. The name itself indicates, it will be clear. Name से आप पता लगा लेंगे ribose sugar किसमें present रहती है? RNA में. Okay, the pentose sugar or the sugar which is present in case of RNA, it is what? It is ribose. And the sugar which is present in case of DNA, it is deoxyribose sugar, and both are the pentose sugar. Clear? Now if you will see the diagram of this ribose, यहाँ पे आप ribose का diagram देखेंगे. कितनी है? 5 chain, 1 2 3 4 5. Okay, अगर हम chain में लिखेंगे कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4 and 5th one क्या है? It is free from the chain. And same thing you can see here, 1 2 3 4 and 5th one is the free one. Now if you will see here what is happening, ribose having 2 hydroxyl group. अगर आप ribose पर देखेंगे कितने hydroxyl group है? 2 hydroxyl group, that is OH group. hydroxyl group क्या होते हैं? OH group. तो कितने hydroxyl group होंगे ribose में? 2 OH group. But if we will talk about the DNA having only 1 hydroxyl group, and the 1 remaining hydroxyl group will be replaced by the hydrogen. Okay, यहाँ पे आप देखेंगे ये OH group किससे रिप्लेस हो गया? हाइड्रोजन से. तो हमने किसको डी कर दिया, यानी कि किसको रिमूव कर दिया है? दिस oxy. Okay, this hydroxy group we have removed from here, and it will become the deoxyribose. Okay, so now what is the use of this 2 hydroxyl group, and what is the use of this 1 hydroxyl group? So here if you will see that if there will be 2 hydroxyl group, अगर hydroxyl group ज़्यादा होंगे, it will be more reactive. Okay, and those who are having less hydroxyl group, it will be the less reactive. ये क्या करेगा? ये कम react करे, it will be react more. ribose sugar क्या करेंगे? ज़्यादा react करेंगे, और deoxyribose sugar कम react करेंगे. So now
इफ इट विल बी मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो स्टेबल भी कम होगा, कि रिएक्ट ज़्यादा करेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. एंड हियर इफ विल टॉक अबाउट दिस डीएनए, इट विल बी लेस रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम है तो ये भी क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे. कम रिएक्टिव होंगे, इट विल बी मोर स्टेबल. एंड दिस फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल. दैट्स वाई द मोर द जेनेटिक मटीरियल वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए. हम जितनी बात करें डीएनए की, क्या है, डीएनए मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएन. दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट वन. ओके, नाउ another thing that or the other component of this nucleotide, it is phosphate group. Okay, so phosphate group we are showing with the H3PO4, or sometimes we are connecting the phosphoric acid with this one. Okay, जब हम क्या करेंगे, phosphoric acid भी ऐड करेंगे, what it will form, it will form the nucleotides. Okay, so this is the structure, this is the name of the phosphoric acid which is here. And if you will see the structure of phosphate, it is what, it is H3PO4. Okay, H3PO4. So we will add this group with the sugar as well as nitrogenous base here. Okay, so now what you have concluded from here, we are having three things: nitrogenous bases, pentose sugar, phosphate group. Okay, so in all these things I have written here. Again, if you can see here, these are the two rings which is we have shown. Purine में कितनी थी, 2 rings. Pyrimidines में only 1 ring. Clear? So this is the only example to show you that it is the adenine and this one is the thymine. So I am rubbing it here. Now we will see the structure of whole nucleotides, how it is forming. हमने सबसे पहले क्या लिया यहाँ पे, we have taken sugar. ये क्या है, जो black I have drawn, it is whole, it is ribose sugar. Okay, ribose sugar 1 2 3 1 2 3 4 and this one is the fifth one. Fifth carbon chain free है, which is having OH group. Okay, now we have taken this ribose sugar and attached with this nitrogenous bases. हमने किसकी बात की थी यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेसिस की. नाउ इफ यू विल सी हियर, देयर कैन बी डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. एज वी हैव डन, वी आर हैविंग एडेनाइन, वी आर हैविंग ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. तो इस नाइट्रोजन बेस की in place of this nitrogenous bases, we can take any of the nitrogenous bases. We can take adenine, we can take cytosine, thymine. Okay, it's our choice. So here I have written nitrogenous bases. कुछ भी nitrogenous base हो सकता है, but the only condition is that in place of RNA में क्या हो जाएगा, it will be replaced by the uracil. Okay, इसमें क्या हो जाएगा, RNA में uracil होगा और DNA में thymine base. Otherwise everything will be same here. And in case of sugar हम क्या कह रहे हैं, both will be the hydroxyl group in case of RNA, and in case of DNA there will be only one hydroxyl group. अब हमारे पास sugar भी आ गई, हमने इसमें nitrogenous base भी ऐड कर दिया. Okay, now we will add the phosphate group. So we have added the phosphate group also. Now what will happen, as it will react with this phosphoric acid, क्या करेगा, because sugar क्या है, sugar is a organic compound. Sugar is organic compound which is having hydroxyl group. Sugar कैसा है, organic compound, इसमें क्या ऐड है, hydroxyl group. But if you will see here, this H3PO4, PO4 क्या है, inorganic, and it is having this OH group which is showing what, it is acid. These are the acidic. इसका नेचर कैसा है, acidic. So what it will tend to do, it will react with this OH group. इसका जो OH group है वो किसके साथ react करेगा, sugar के साथ में. And again we know that in chemistry also we have done, if we are combining the acid with alcohol, जब भी हम क्या करते हैं, alcohol में acid मिलाते हैं, what happens, it forms ester. यही होता है, it forms ester, and what it is removing, H2O. Okay, this is general reaction which we are studying chemistry also. Whenever we are adding alcohol with acid, what it will do, it will do dehydration with removal of water molecule and it will form ester. Same thing will happen here also. We are having this OH group which contains alcoholic group. ओके, ये OH किसको डिनोट कर रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप. अगेन दिस OH, यहाँ का जो OH ग्रुप है किसको डिनोट कर रहा है, एज इट इज एसिड.
This phosphorus is as a phosphoric acid, so it will act as a acid. When they will combine, when alcohol and acid will combine, what it will do? It will remove water molecule. So how it will remove molecule? Water molecule OH phosphoric acid से और hydrogen molecule राइबोस शुगर से क्या होगा? आउट हो जाएगा and it will lose one water molecule. And due to this loss of water molecule, what will happen? There will be formation of one bond. As हमने मूव कर लिया, so what is remaining here? This oxygen molecule, and we have removed H2O from here. Clear? So हमने कहा कि when we are removing the water molecule with the addition of alcohol and acid, what it is forming? Ester. So what type of bond it will form here? Ester bond. यहाँ पर भी क्या बनेगा? Ester bond. And where it is forming? In this phosphate. So we are saying phosphoester bond. This phosphoester bond forms between this phosphate and this oxygen molecule of sugar. Okay. Another thing, when we have combined all these things, we said it is a nucleotide. जब हमने राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया, what we said, हमने बोला ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया. Another one term is there, that is nucleoside. So what is this nucleoside? Nucleoside is that thing in which what happens, we have removed this phosphate. Okay, instead we have removed this phosphate and we have taken only this sugar and nitrogenous bases. So here I can write here, what is nucleoside? Nucleoside is a combination of sugar and nitrogenous bases. Okay, it doesn't include this phosphoric acid or the phosphate group. So it will, so don't confuse between these two, nucleoside and nucleotide. Nucleotide में तीनों चीजें combine होंगी और nucleoside में सिर्फ ribose sugar as well as the nitrogenous bases. Clear? Now I have shown one more thing here. What is this thing? See, we are talking about nucleotides. हम nucleotides क्या कह रहे हैं? Nucleotides, these are the chains. ओके, हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड है? वन न्यूक्लियोटाइड, देन अनदर न्यूक्लियोटाइड एंड दिस अनदर न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड क्या बना रहे हैं? दिस विल मेक द न्यूक्लिक एसिड, मे बी डीएनए और आरएनए. तो इनका क्या है? इनकी एक चेन होगी. किसकी चेन होगी? न्यूक्लियोटाइड्स की. हमने एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, वी हैव डन वन न्यूक्लियोटाइड. व्हेन दिस न्यूक्लियोटाइड will join with another nucleotide. Okay, ऐसे ही एक अगले न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो जाएगी. Again this nucleotide will combine with another nucleotide. So what it is forming here? Whole nucleic acid. ये क्या बना देगा? Nucleic acid बना देगा. So now we will see that what are these things, how they are forming. When these two are attaching, nitrogenous bases are same. Okay, ribose sugar, then phosphoric acid. So when they will combine, it will form what? It will form phosphoester bond. Okay, again this will form phosphoester bond. Here I am showing here. Again by the removal of this one, it will form ester bond or phosphoester bond. Okay, now again अगर इस न्यूक्लियोटाइड को इस न्यूक्लियोटाइड से ऐड होना है, ज्वाइन होना है, what it will do? It will the third carbon chain. Okay, 1, 2 and 3rd. राइबोस शुगर की जो थर्ड कार्बन चेन होगी वो किससे अटैच करेगी? फॉस्फेट के OH ग्रुप से. एंड व्हेन इट विल अटैच विद दिस OH ग्रुप, अगेन व्हाट इट विल डू? इट विल रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, हमने बताया है कि जब भी अल्कोहल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, क्या करेंगे? इट विल फॉर्म द एस्टर एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड ड्यू टू दिस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, okay, due to this removal of water molecule, what is happening here? It will form O. Okay, only water will remain here, this type of bond. Okay, so this type of bond which is forming here, again it would be the ester bond, right? And here if this molecule will, this nucleotide will attach with this one, what will happen? एक तो यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, दूसरा क्या होगा यहाँ पे? अगेन ये जो अल्कोहल है इस एसिड के साथ में रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड बनाएगा और फ्रॉम हियर OH विल मूव एंड हियर O विल मूव. ओके, फिर से H2O मॉलिक्यूल निकला और फिर क्या रह गया? ओनली H मॉलिक्यूल. ओके, फ्रॉम हियर वी हैव सेड दैट वी आर हैविंग दिस मॉलिक्यूल हियर ऑल्सो. ओके, क्योंकि O तो ऑलरेडी हमारा H निकल चुका है, तो हमारे पास कितना रहता है? O बॉन्ड.
So all these are what? These are the phosphoester bond. अब एक बार phosphoester and दूसरा भी क्या है? Phosphoester. So what it will form? Phosphodiester bond. And we can say that whenever there will be formation between the nucleotides of phosphate as well as the ribose, what it will form? It will form the phosphodiester bond here. Okay. Same thing we have done here also. Okay, so what we are removing water molecule, and it will remain only O molecule of this sugar. So here also it will remain O molecule. Okay, so it will also remain here O molecule, and it already will remove with the OH molecule of the phosphate. So here we have drawn the chain of the न्यूक्लियोटाइड्स. हमने एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से दूसरे को तीसरे से हमने ज्वाइन कर लिया. नाउ इफ यू सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज शुगर. अगर आप चेन को देखेंगे क्या हो रहा है, इट इज शुगर. ये शुगर किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द फॉस्फोरस. ओके, अगेन दिस शुगर इज कनेक्टेड विद व्हाट? इट इज कनेक्टेड विद द नाइट्रोजनस बेस. इसको अगर बैकबोन देखेंगे, अगेन अगर स्केलेटन, इफ यू विल ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर, व्हाट इज हैपनिंग? अगेन दिस शुगर इज कनेक्टेड विद दिस फॉस्फोरस, and this phosphorus is again connected with sugar, and then this sugar is connected with nitrogenous base. यही हो रहा है. ये पूरी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है. And we know that if we'll talk about the DNA is a double helical structure. So in another helical, you can see that, okay, you can see that nitrogenous base will be there. Okay, again it is connected with sugar, and sugar is connected with phosphorus. Again this nitrogen, then it is connected with sugar, and it is connected with phosphorus. इसी तरीके से एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई, और दोनों को कंबाइन किया तो what it will form? It will form the DNA. So we will discuss more about these chain in the structure of DNA, and how, why I have written 2 bond, I have written 3 bond. We will understand about it also. So for this session, that much is there, that what is nucleotide, and what are the basic structure of this nucleotides, and how on the basis of these things, how we will form the structure of DNA as well. Okay, so that's all for today. Thank you.